Hey guys, good evening. So we're coming on to our chemistry for competitions का next lecture, Dalton's atomic theory, right? अब ये जो Dalton's atomic theory है, this led to a lot many advancements in the study of chemistry, okay? Because ये सबसे basic था. First time हम लोगों को पता चला कि जो atoms हैं वो क्यों combine होते हैं to form molecules. या first time एक theory जो कि formulate की गई that was by Dalton. First when you will study structure of atom तो उसमें थोड़ी सी history also I'll tell you कि किस तरह से atom की evolvement जो थी वो हुई थी. But as of now we are just going to start with a topic which is Dalton's atomic theory. तो इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी लूंगी, आपके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, this also I am going to take. Then I will take the average atomic mass, and in the end I have also included a few questions. So please go through the video entirely. बीच में ब्रेक करोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इसका क्लियर नहीं होगा for the next video 2.6 which will come soon, right? So over here, before we go on to our topic, that is the Dalton's atomic theory, let me just tell students who have just joined कि ये एक नया हम लोगों ने सीरीज शुरू किया है, केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिशन्स, पूरे साल चलेगा, आपको तैयार करेगा फॉर योर नीट 2023 एंड योर IIT JEE 2023. इस पे वी आर गोइंग टू टेक थ्योरी एंड वी आर गोइंग टू टेक सर्टेन क्वेश्चंस. वो जो क्वेश्चंस जो होंगे उसका नंबर तो बहुत नहीं होगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस ओवर. But a test series and a question series you can definitely find on the app for chemistry of competitions which would be coming soon. पर उसके लिए ऐप को प्लीज डाउनलोड करो, एक बारी टेक अ टूर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन chat with me on the app directly. ठीक है, so let's go on to our, let's hit the topic. Oh yes, app का जो description है, जो link है, that is down in the description box. You can just go and look at that link और उसको download करो. हाँ हाँ, free है, downloading के कुछ पैसे नहीं है. So you can, and there's a lot of free material also on the app. You can just go through that, right? So we are going on to Dalton's atomic theory. अब हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था. जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस. सो हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस किया था. तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ओके और हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एलिमेंट्स जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, व्हाई डू दे बिहेव एज दे डू सो. तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे that led to Dalton's atomic theory. So he gave us the atomic theory. Let's see what the atomic theory says. So it says that elements are made up of tiny particles which are known as atoms. Atoms का मतलब होता है uncuttable. Okay. So elements, they are made up of tiny particles जिनको हम क्या बुला रहे हैं, they are known as atoms, and each element is characterized by the mass of its atoms. जैसे for example, if you are taking sodium, sodium has a mass of 23, right? Or if we are taking chlorine, chlorine will have a mass of 35.5. So each atom that is characterized by its mass. Atoms of the same element, wherever you find sodium, they are going to have same mass, but atoms of different element, they will have different masses. So अगर आप Na और Cl का mass compare कर रहे हो, उसका जो mass होगा that is going to be different. But अगर आप sodium किसी भी sample से ले रहे हो, उसका mass that is always going to be same. ठीक है? Then chemical combination of elements to make different substances occur when atoms join together in small whole number ratio. So in simple language, let's take an example. If we are taking H2O, so hydrogen and oxygen, they are present in the ratio 1:2. ठीक है? Sorry, 2:1. Hydrogen and oxygen, they are present in the ratio 2:1. Okay, let's rectify this. And if we are taking
For example, carbon dioxide. So in case of carbon dioxide, the ratio that is going to be 1:2. If you're taking sulfur dioxide, the ratio of sulfur to oxygen, that is going to be 1:2. And if you're taking H2O2, hydrogen peroxide, the ratio that is of hydrogen and oxygen is 1:1. Right? So chemical reactions जो होंगे, जितने भी chemical reactions होते हैं, उसमें the rearrangement of atoms that is going to take place. The atoms themselves, they will not be changed. वो change नहीं होते हैं. जैसे आप NaCl बना रहे हैं, तो combination of sodium and chlorine that is going to take place to give us NaCl. But still in this, the mass of sodium that will remain as 23 and the mass of chlorine will remain as 35.5. There is no change in the masses. Okay, so these were the postulates of Dalton's atomic theory, or as it is saying that all the atoms that can be identified by the number of protons and neutrons they contain, that is the atomic mass. Therefore, the concept of atomic number, mass number and isotopes, that came into existence. So, if we are talking of any neutral element, neutral element means that it does not have any charge. So, if you're talking of any neutral element, in case of any neutral element, the atomic number, let's see what is going to be the atomic number over here. Atomic number which can be expressed by Z, that is equal to either number of electrons, or it can be equal to number of protons. Okay, so that is what the atomic number Z is going to be. So in a neutral atom, both of these are equal. So in a neutral atom, what are we saying? That number of protons that is equal to number of electrons. Now chemical identity of an atom, उसको हम लोग determine कर सकते हैं उसके atomic number से, because जो chemical reactions होंगी वो होती है because of exchange of electrons, right? Now if we're taking over here oxygen, so let's say that the atomic number of oxygen that is equal to 8. So it means that the number of protons in oxygen that is equal to 8, number of electrons in oxygen that is also equal to 8, right? Now when we are talking of mass number को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं with A. तो मास नंबर जो होता है that is equal to number of protons plus number of neutrons, that is, which is, you know, they are collectively also known as nucleons. Nucleus of the atom में ये present रहते हैं, तो इसलिए हम इसको nucleons भी बुलाते हैं. So we can very clearly say over here that the atomic number A, that is equal to number of protons plus number of neutrons. Okay, now if you need to find the number of neutrons, how would you do that? Number of neutrons जो होगा वो हो जाएगा atomic mass minus atomic number, A minus Z, right? और एक एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक एलिमेंट X को हम रिप्रेजेंट करते हैं with the mass number on the head and the atomic number on the foot. You can take a lot of examples over here, like you have oxygen, 16 and 8, we have carbon, 12 and 6, you have nitrogen, 14 and 7. So this is how you can represent any atom, in which the mass number that will come on the head and the atomic number जो है वो नीचे foot पे आएगा. फिर इसी से हमारे पास आ जाता है concept of isotopes, which was a drawback towards the Dalton's atomic theory, क्योंकि Dalton's atomic theory बोलती है कि जो masses होते हैं वो एक element के same होते हैं. तो isotopes थोड़ा सा different था. Isotopes का मतलब क्या हुआ कि they are atoms of
same element having different mass number or atomic mass, different mass number, but same atomic number. तो ये आइसोटोप्स होते हैं. ओके, सो इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं जो आइसोटोप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इनके पास जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट. सो यू लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं. वन इज प्रोटियम which is commonly known as hydrogen. तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन का मतलब यही होता है with the mass number of 1 and atomic number of 1. इसके पास this is the only element जिसके पास 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ओके, फिर सेकेंड हमारे पास आ गया ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम इज गोइंग टू हैव 1 न्यूट्रॉन. तो 2 minus 1 जो कि हमने फॉर्मूला लिया है. So 2 minus 1, 1 neutron. And then we have tritium. Tritium is going to have 2 neutrons. 3 minus 1, which is 2 neutrons, right? So, you know, all the isotopes, they will have different mass number. They will also have different number of neutrons. Now, chemical properties जो elements की होती है, उसको determine किया जाता है by protons and electrons in its atom. So न्यूट्रॉन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है. तो आइसोटोप्स जो होंगे सेम एलिमेंट के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. ऑल ऑफ दीज दे आर गोइंग टू हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाता है कि जब भी हम आइसोटोप्स लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास? ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सो आई विल हैव टू क्लियर माय स्क्रीन गाइस. लेट्स सी. यस, सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ एवरेज एटॉमिक मास, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज आई एम टेलिंग यू. तो कैसे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोप्स का कैलकुलेट करते हैं? जो आइसोटोप्स होते हैं वो एक डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है तो तीनों के तीनों एक डेफिनेट रेशो में प्रेजेंट रहेंगे. उसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं 35 एंड 37, वो भी एक फिक्स्ड रेशो में प्रेजेंट रहते हैं. So how do you calculate the average atomic mass? That is equal to m into A plus n into B upon m plus n. ठीक है, जहां पे m क्या है? m that is the ratio of first isotope right? And A is the atomic mass of first isotope. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है N. N is the ratio of second isotope. And B is the atomic mass of second isotope. क्लियर? और इसके बेसिस पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम ओवर हियर, sorry, of chlorine over here. So chlorine has 2 isotopes, Cl35 and Cl37.
and they exist in the ratio 3:1. So we're taking the average atomic mass. The formula is m into A plus n into B divided by m plus n. Right? So m आपके पास क्या आ गया 3 into 35 plus n is 1 multiplied by 37 upon 3 plus 1. Right? So when you calculate the answer that comes to 35.5, therefore the average atomic mass of chlorine we are taking as 35.5. Now over here, if there's a formation of cations, तो क्या होगा? अब आपको पता है कि ये तो हम लोग न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर number of protons that is equal to number of electrons. Now how the cation is formed and how the anions are formed. So cations means that they are positively charged, right? So positively charged का मतलब क्या हो गया? Number of protons जो है वो number of electrons से ज़्यादा हो जाएंगे, और in other words, in this case, loss of electrons will take place. और फिर उसके बाद आ जाते हैं anions. तो anions क्या हो गए? Negatively charged. Now, if it is negatively charged, number of electrons जो है, they will be greater than number of protons. So, there is going to be gain of electrons. तो जितने भी loss of electrons होंगे, उतने ही number of positive charges लग जाएंगे. जैसे अगर हम लोग सोडियम ले रहे हैं, तो सोडियम के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इसके पास एक प्रोटोन ज्यादा हो गया, तो इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आ गया. मैग्नीशियम के पास टेंडेंसी है टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास क्या हुआ? मैग्नीशियम के पास 2 प्रोटॉन्स ज्यादा आ गए, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया? 2 पॉजिटिव. नाउ इफ यू टॉकिंग ऑफ एनायंस, क्लोरीन के पास टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर ज्यादा आ जाएगा, isn't it? और अगर आप ले रहे हो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, तो इसके पास कितने नेगेटिव चार्जेस आ गए? 2. So these are known as what? These are known as anions. Now please remember that the number of protons they are going to, number of electrons are going to change, but number of protons and number of neutrons during the formation of ions, that is going to remain the same. There is going to be no change in the number of protons and the number of neutrons. It is the ions are only formed because of change in number of electrons. Okay guys, so let's hit the questions. देखिए कैसे questions है इस section में से. Ionic mass of X2 negative is 16. Okay, it has 8 neutrons. Determine the number of its A protons, number of electrons and atomic number Z. So what have they given us in the question? Question में उन्होंने दिया है ionic mass of X2 negative, which is equal to 16, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उन्होंने हमें कितने दिए हैं? 8. तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स हमने बोला कि मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जब चार्जेस होते हैं या जब आयंस बनते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी इजी, 16 minus 8 which is going to be 8. इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? So if you're talking of electrons, so electrons होंगे आपके पास 8 plus 2, because 2 negative charge है, तो number of protons plus the charge, number of electrons अगर आपको find करने हैं, तो number of electrons that will be equal to number of protons plus जो भी charge है on the molecule or on the atom, not the molecule, on the atom, उससे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने कितने कैलकुलेट करे हैं? 8 प्लस चार्ज कितना है? 2. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल दिस हैव? इट विल हैव 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक नंबर? सो वी सॉर्टेड विद A
We sorted with B. What is C? C is going to be, in case, we are talking of an ion. So in case of ion, the atomic number will only correspond to the number of protons. It is only in the neutral atom that atomic number is equal to number of protons is equal to number of electrons. But in case of an ion, the atomic number that will be equal to number of protons, and we've calculated the number of protons as 8. Therefore, the atomic number over here, that is going to be 8. Right? So this is a very simple question. Let's hit question number 2. B10, so ये average atomic mass का question है guys. B10 5 and B5 11 are two isotopes of boron. If average mass number is 10.2, so they've given us the average mass number. What is the percentage of B? ठीक है? So let's say that percentage of boron 10 5, इसको हम लोग ले लेते हैं x. तो अगर ये x है, तो percentage of B11 5 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x. ठीक है, अगर आप परसेंटेज ले रहे हो तो टोटल परसेंटेज 100 आ गई. ठीक है, so let's go on to the formula of average atomic mass, which is equal to m into a plus n into b divided by 100. अब m हमें कितना आया है? x. और एवरेज एटॉमिक मास उन्होंने हमें क्वेश्चन में कितना दिया है? 10.2. So x into a is how much? 10. So let's put 10 over here. X into 10. ठीक है, प्लस n कितना है हमारे पास? n is 100 minus x. So 100 minus x into what is b? B is 11 divided by 100. Okay, so when you calculate this in terms of x, तो x की जो value है वो आ जाती है 80%. So if it is x is coming to 80, what is going to be the atomic mass of, what is going to be the percentage of B11? So the percentage of B11 5, that will be equal to 11 minus 80, which is equal to 20%. Right, guys? So these are the questions. Please just go through this lecture very, very carefully and get ready for the next one. Next हमारे पास क्या आ जाएगा? We are going to go on to concentrations, जो कि एक बड़ा important topic है for the competitions. Molarity. We are going to discuss molarity. Molarity में मैं आपको next वाले उसमें एनालिटिकल मोलारिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम मोलारिटी क्या होती है और कैसे हम दोनों को कैलकुलेट करते हैं, उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. सो यू बी रेडी फॉर दैट, राइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको अच्छा कंटेंट देने की. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि मैंने स्टार्ट करी है, एंड I hope तो नहीं, I will definitely finish it before your NEET. फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. तो फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी वीडियोस हैं उनको बहुत ही अच्छे से देखो, एंड आई विल सी यू सून, राइट, विद द नेक्स्ट वीडियो.